जाए तो लगता है कि तुम संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर चुपचाप ही सो जाए तो लगता है कि तुम Respected Principal, Boys Higher Secondary School, Sopore, Mr. Abdul Dar sir. Admirable Chief Guest, CEO Anantnag, Mr. Abdul Shah sir. Mr. Fayaz Ahmad Malik, Principal Sultanpura, Patan. Mr. Abdul Ganai, Principal Higher Secondary School, Delina. Guests of honor, Ms. Naseema Akhter and Dr. Parvez Ahmad. Distinguished guests and dear colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we all have gathered here to honor our colleagues who are superannuated from their services during the year 2020-2021, Ms. Naseema Akhter and Dr. Parvez. This gathering has been private for those as well who have been transferred from this institution during this period. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله خبير بما تعملون إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نور كزوشد نور خاقدا وصلى الله على نور كزوشد نور خاقدا زمین از خوبی او ساکن فلک
मोहम्मद अहमद महमूद वीरा खाल कशिबिस्तु मोहम्मद अहमद वीरान खाल के कशिबिस्तु कज़ो शुद بود हर मौजूद अज़ो शुद दीद खाबीना कज़ो शुद بود हर मौजूद अज़ो शुद दीद खाबीना वसल्लल्लाहु अला नूरिन कज़ो शुद नूर पैदा। खाने दिल की कोई मंजिल खाली चाहिए, खाने दिल की कोई मंजिल खाली। आए हैं आज बड़ी दूर से कई मेहमान अजीज। Honorable Principal Sir, Mr. Abdurrashid, Chief Guest on the occasion, Mr. Abdul Rauf Shah Saab, Chief Education Officer Anantnag, Guests of Honor, Ms. Naseema ji, Dr. Parvez Ahmad, regular guests, Mr. Abdurrashid, Mr. Fayaz Ahmad, Mr. Saeed Iqlaq, Mr. Tanveer Ahmad, Mr. Naseem Tahir, Mr. Mohammed Akbar, Ms. Masrat, Ms. Zarifa, Ms. Kausar, and Ms. Naga, and esteemed faculty and staff. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I feel honored that I have been given an opportunity here to welcome the esteemed guests on this auspicious farewell function. So, in this connection, on behalf of the principal, the faculty, the staff members of this institution, I extend warm and affectionate welcome to all of you. In fact, this day reminds me about a great romantic poet, Coleridge. He says, to meet, to know, to love, and then to part is the sad fate of many a heart. The verse is self-explanatory. The verse is based on change. This verse reflects change. Change is a natural law. We cannot go against change. This is natural law, we have to accept it. कितना मुश्किल होता है उन लोगों से बिछड़ना जिनके साथ जिंदगी के खूबसूरत पल गुजरे हों। वो हंसी पल, वो कहे, वो तंजो मिजाज, वो हंसी मजाक। जो लोग बिछड़ जाते हैं जो लोग बिछड़ जाते हैं उनसे कब मुलाकात होती है। घर मिलती जाए कहीं तो वो जिसे हुआ करते हैं। नजर करना चाहूँगा, उसके साथ मैं अलविदा लूँगा। जिंदगी अगर राज है, राज ही रहने दो। जिंदगी अगर राज है, राज ही रहने दो। अगर है कोई ऐतराज तो ऐतराज रहने दो। अगर है कोई ऐतराज तो ऐतराज रहने दो। और अगर आपका दिल कहे हमें याद करने को, पर अगर आपका दिल कहे हमें याद करने को, तो दिल को अब ये मत कहना कि आज रहने दो। बाकी वसल्लम। na
रन्ना रन्ना रा 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 रन्ना रन्ना तमन्ना चान दीदारु छुमोयंबर जले बंबरो तमन्ना चान दीदारु छुमोयंबर जले बंबरो फजिस यापत लजिस हुचने गजिस चाने गले बंबरो तमन्ना चान दीदारु छुमोयंबर जले बंबरो करान महाजूर चुहसनस गर वनान यार स्वतोक कत वरान महाजूर चुहसनस गर वनान यार स्वतोक कत ये दिल देवान गो चेपत बेस सदना रले बंबरो ये दिल देवान गो चेपत बेस सदना रले बंबरो तमन्ना चान दीदारु छुमोयंबर जले बंबरो कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़ कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़ पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले तमन्ना चान दीदारु छुमोयंबर जले बंबरो फजिस यामत लजिस उचने गजिस चाने कले बंबरो तमन्ना चान दीदारु छुमोयंबर जले बंबरो। थैंक यू। जो देखा अहले आलम को निगाहे ऐबगीरी से जो देखा अहले आलम को कोई काफिर कोई फासिक कोई जिंदगी अकबर था मगर जब हुआ दिल एहतिसाबे नफ्स फरमाया मगर जब हुआ दिल एहतिसाबे नफ्स फरमाया हुआ मालूम कि हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। Let me dedicate these lines to your persona. The man with distinct vision, fountainhead of experience, veteran, and an epitome of decency, of course, is our esteemed Mr. Abdul. If there is an exemplary of thorough gentleman, ever soft-spoken, is none else than our Rashid sir statistics. Every colleague with whom we have worked, especially Fayaz sir, Tanveer sir, Akbar sir, who is not here, Zarifa ji, Kausar ji, all of them have their uniqueness and above all, the best gifted human beings, really irreplaceable. Special mention of Akhlaq sir, who really upholds the sanctity of his name, the etiquettes par excellence. Not to miss Mr. Nasir Tahir sir, whom I really miss, especially on my back home journey. Special remembrance adhere to Masrat ma'am and Nadia ma'am, as my right and left side couch always feel their absence. The trivialities we share,
the discussions, and much, much more that made our day. Really miss. Those who are in active services somehow shall meet on the crossroads, but those who superannuated are now playing their second innings. Our Parvez sir, though retired from active services, well said by Khurshid sir, but we all know he has defied the age gravity by his enthusiastic lifestyle and conscious fitness. Stay blessed, sir. Lastly, let me steal a few more moments and bore you just to pay my ever-loving tribute to our dearer and dearest Naseema. Ma'am, if somebody is being missed, and that too excessively, almost every day, whose absence is being felt terribly from sugar-free brunch tea to lunch cuisines, whose elegance and grace still illuminates our memory, and who has been our inspiring iron lady with unshakable confidence, strong decisiveness, and ever-loving nature. We really miss you. Wish you all health, contentment, peace, prosperity, and eternal bliss. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Esteemed Principal, Higher Secondary Sopore, other principals, Rishi Saab, Haya Saab, and my dear colleagues, although I am seeing some new cases here also, but to be frank enough, I was not feeling well, but I thought it a great occasion to be a part of this party wherein we are paying our tributes to our departing colleagues and are acknowledging their service to the department. This is a momentous occasion wherein we can acknowledge and commit upon the services of our departing colleagues. My dear colleagues, human life is a tale of tragedy since its inception in this universe. The moment one departs from the cradle, one feels, senses the separation. At this occasion, everybody seems to be gloomy, one who is leaving the department. The gloom becomes quite apparent in his sight. But a judicious thinker like Mr. Dr. Parvez and Mohtarama Naseema, who have left this department, they will think it in a different way, being very judicious. They will look upon this juncture as a stage wherein a person leaves one platform and embarks upon another platform. I think my departing colleagues, they are very judicious. They will take this occasion like this. Now, Russian writer has rightly said that he has just tried to portray the human life. He says that a person departs from one darkness and embarks upon
and it plunges into another darkness. It departs from one darkness and plunges into another darkness. Between these two realms of darkness, there is a stage which is called light. What counts is the deeds of a person in this life, because this life is ephemeral, nothing lasts forever, ever. Only the deeds are everlasting, perennial, which we call in the scientific terms. So a person during this span, which is called life, must be morally sound and pragmatic. Worthy principal, respected staff members, and all other guests, and my dear best friends, Assalamu alaikum. I am very much thankful to you all for organizing such a grand party to celebrate my superannuation and also the superannuation of Mr. Dr. Parvez Ahmad and farewell for respected staff members who have been transferred farewell for respected colleagues who have been transferred from this institution. Dear colleagues, although it's not easy to manage in such a pandemic situation, still then, all the efforts made by the respected staff members of this institution to make this program successful under the prevailing pandemic situation are exemplary and praiseworthy. These depict love and affection of the respected staff members for their departed colleagues. Honestly speaking, only the love and affection of the staff members triggered me to present myself here. Otherwise, the prevailing circumstances do not allow to gather here in such a manner. It was on 31st May 2020, the day of my superannuation, when almost all India was under lockdown, that I was very much delighted by the virtual expressions and the previous memories flashed by the dear colleagues, by my dear colleagues on the official WhatsApp. These sweet memories will always be with me, and these will always be with me to refresh my past and delight my future. At last, I must thank you all the colleagues. I must thank all the colleagues for this occasion to make all the things possible. My best wishes are always with you. Thank you. CEO Saab, respected Principal Saab, and other guests and my dear colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
चूंकि मैं जज्बाती हो गई इसलिए मैंने एक शायर लिखा है यहाँ पर नसीमा जी के लिए। आप हैं पास जी चाहता है हंसने को, आपके पास जी चाहता है हंसने को, कल जुदाई से लिपट कर हमें रोना होगा, कल जुदाई से लिपट कर हमें रोना होगा। आप जहां होंगे बना लेंगे जगह अपने लिए, आप जहां होंगे बना लेंगे जगह अपने लिए। आपको आता है हुनर दिल में उतर जाने का, आपको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। मेहरबान हो के बुला लो मुझे, मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहे जिस दम, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस दम। मैं गया वक्त नहीं फिर न आ सकूं, मैं गया वक्त नहीं फिर न आ सकूं। बाकी शुक्रिया, आपने मुझे 1 मिनट दिया इसके लिए बहुत निहायत ही इज्जत एहतराम और मोहब्बत के साथ आप सबके सामने हाजिर खिदमत। यहाँ पर ज़ीवेकार प्रिंसिपल साहब, उपशीकार साहब, मेरे भाई दोस्त और अक्सर भी मोहतरम अब्दुर्रशाद साहब, मेरे एक और भाई यहाँ पर हैं फयाज साहब, रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस महफिल का जो मुद्दा व मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन खुसूसन यहाँ जो नसीमा जी बैठी हैं हमारे सामने, उनके एजाज़ में भी ये महफिल जमाई गई है। और दूसरे जो हमारे रफ़का, हमारे दोस्त, हमारे कोलीग्स जो ट्रांसफ़र्स हुए हैं या प्रमोट हो गए हैं उस वजह से इस इंस्टीट्यूशन को छोड़ चुके हैं, दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम और मोहब्बत और अक़ीदत। मेरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस स्कूल में, जैसे शाह साहब भी फरमा रहे थे कि उनके बहुत सारे टेन्योर्स रहे हैं, लेकिन मेरी भी ये खुशी है कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ, एवं लड़ा भी हूँ। और मेरा जो सुपरएनुएशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्कूल में हो गया, और तब भी मैं वैसा ही था जैसा आज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस स्कूल के साथ बहुत ज़्यादा अक़ीदत रही, बहुत ज़्यादा अक़ीदत रही। सुपरएनुएशन को छोड़कर, एज ए टीचर को छोड़कर इस स्कूल के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रही है बचपन से ही। एक यहाँ पर मैं वाक़ा पेश करूँगा जो हमारी ज़िंदगी से इस स्कूल की वाबस्तगी है। जब टेलीविज़न नए आए तो हर घर में टेलीविज़न नहीं थे, सरकारी बिल्डिंग्स में टेलीविज़न हुआ करते थे, और पहली बार जो हमने टेलीविज़न भी देखा है वो भी इसी स्कूल में देखा है। कहने का मतलब ये है कि तब तो टेलीविज़न की एक और बात बताऊँ, टेलीविज़न की टिकट लगा करती थी कि कौन देखने आए, फिर हम पास लिया करते थे। पर अब कहने का मतलब ये है कि इस स्कूल के साथ बहुत ज़्यादा जज्बात जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा जज्बात। दोस्त जो भी दोस्त अब हैं वो सब एक साथ इसी स्कूल में पढ़े हैं, इसी ग्राउंड में खेले हैं। हमारी ज़िंदगी का बेशतर जो वक्त है इस ग्राउंड में गुजरा, यहाँ ही खेले कूदे लड़े। बहरहाल
बाद में यहाँ पढ़ाया भी, कुलीग्स के साथ रहकर, फीमेल कुलीग्स के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो इस स्कूल ने जो आज तक दिया है, हर एक को, आपको भी मुझे भी सिखाया ही सिखाया है। इसलिए इस स्कूल की जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। हम सबकदोश हो गए हैं, हकीकतन हम सबकदोश हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस स्कूल, इस इंस्टीट्यूट के तई जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो अब भी वही हैं, क्योंकि दिस स्कूल एक्चुअली बिलोंग्स टू अस, बिलोंग्स टू आवर किड्स। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है इस स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। आदाब से मजबूर अगर हो भी गए हम, आदाब से मजबूर अगर हो भी गए हम, हंसते हुए मौसम की कोई बात करेंगे। Honorable Chief Guest, Shah Sahab, Chief Education Officer, Anantnag, Mr. Fayaz Sahab, Principal, Higher Secondary School, Mr. Abdul Rashid Sahab, Principal, Higher Secondary School, Delna, Mr. Said Ikhlaq Sahab, Senior Lecturer, Mr. Nasir Sahab, Senior Lecturer, Mr. Tanveer Sahab, Lecturer Commerce, and today's our valuable guests, Naseema ji and Dr. Parvez Ahmad and respected colleagues, a very good afternoon to all of you. Colleague के sentiments hurt हुए प्लीज माफ कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी रहने वाली नहीं है। Forgiveness is the best kind of revenge. अगले का नहीं सोचना चाहिए, इंसान वो काइंड नहीं होना चाहिए। मामूली सी सलाम इधर उधर हो जाए फिर दिल में रखते नहीं, ये बढ़ता जाता है और प्रेशर भी बढ़ता है, उससे नहीं रखना चाहिए। तो उन कोलीग से ये जो दो हमारे परवेज साहब और नसीमा जी या दूसरे जो यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर किसी भी और कोलीग से कभी खता हुई दरगुजर करना चाहिए। अब मैं हमारी जो चीफ गेस्ट है मिस नसीमा जी और डॉक्टर परवेज, उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो हमारे वर्दी प्रिंसिपल सर अब्दुल रशीद डार सर, CEO अनंतनाग अब्दुल रशीद सर, फयाज अहमद मलिक सर, अब्दुल रशीद गनाई सर, उनसे उनके हाथों से एक छोटी सी बैंड तोहफा कबूल फरमाएं एज ए टोकन ऑफ लव। नसीमा जी और डॉक्टर परवेज वो छोटी सी बैंड जो हमारे प्रिंसिपल सर शाद सर, फयाज अहमद सर, रशीद सर, वो उनके हाथ से लेंगे। आप प्लीज़ वो कबूल फरमाएं एज ए टोकन ऑफ लव डॉक्टर परवेज और मिस नसीमा। Our chief guest, Dr. Parvez.
I request all of you on behalf of the Govt chair to have lunch, which will be served here in the area lab of the photo session. Thanks all. I deem it an honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. To begin with, I would like to thank Almighty Allah for making this get together a success.